Hello, 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 guys. Good evening. Hello. Okay, perfect. Good evening, guys. How are you? I hope your days are going good and the UPSC preparation as well. So, today, here I am. My name is Harsh Garvi, and today I am going to provide you the mock solution for the 10th mock test, and that is a combined mock test, that of the economy as well as geography. But understand that we are going to cover this in two substantial part. The one is that of the we're going to solve each and every economic questions, so nearly 47 to 50 questions of economy, and in part 2 we are going to focus more about the geography questions. Okay, so if you know that's DICS mock, and that's me, Harsh Gadvi. But what are we focusing right now? We are focusing on this. So this is not going to be the the ordinary or very orthodox mock solution which you guys usually get. But इस बार the more emphasis on solving the conceptual clarity for the students. जैसे कि अगर if we say that in mock 10 of the ICS, what are the questions which is focusing the economy part. So forget about the question, but this should be the concept जो अपन करने वाले हैं. So I have sorted out the concept, the national income, the liquidity trap, speculative money, RBI's role as a bankers government. Along with that, these are the current affairs as well, which we are gonna solve. So let's start with the solution itself. The first question, if we focus on the first question, if there is someone, tell me what you think could be the right answer. Which among the following is are the method to calculate national income in an economy? Very easy question, very easy question. किसी भी अगर बंदे ने 11th 12th और that of the 9th economy NCERT भी पढ़ी होगी, you can easily say national income. What are we focusing on? National income कैसे कैलकुलेट की जाती है, एंड द ऑप्शन इटसेल्फ, those are very easy option. Measuring the aggregate value of the factor of payment. Okay, yeah, that is correct. Measuring the aggregate value of goods and service produced by the firms. Measuring the aggregate value of spending received by the firms. If I may so, then let me explain this to you in a way that understand these are the methods which we focus on while calculating the national income. See, right now we are focusing on the GDP in expenditure method, GDP in factor incomes, GDP at value output. So अपन gross domestic product जब भी calculate करते हैं, we are focusing that of the consumption part, the factor income, the income from the people in the jobs and in self-employment. That is, obviously you will get the wages, you will get the salaries as well, profit of the private sector business as well, and the value output, value added from each of the main economic sectors. So it's a very easy and it's a direct hit question. And अगर किसी को नहीं आया है, you should focus more on the basic part, क्योंकि ये बहुत ही easy question था. Which of the following is are the methods to calculate national income in an economy? All statement A, B, C are correct. देखो, अगर explain करने जाएंगे ना तो आधा दिन निकल जाएगा. सो राइट नाउ वी आर फोकसिंग मोर ऑन द सोल्यूशन पार्ट. बट हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो काफी मेरे को अच्छे लगे, एंड विच इज फॉर दैट मैटर ये सेकंड क्वेश्चन ही है इटसेल्फ, विच इज अ वेरी गुड कंसेप्चुअल क्वेश्चन. उसमें जहाँ पे जरूरत लगेगी आई विल डेफिनेटली गोना एक्सप्लेन कि कैसे होता है. Consider the following statement about the speculative demand for money in the economy. So first you have to understand
कि स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी इन द इकोनॉमी वो होता क्या है। अलॉन्ग विद दैट इफ वी गो बाय द ऑप्शंस, तो ऑप्शंस क्या कहते हैं, मुझे ऑप्शंस कहते हैं कि इट इज द इनवर्सली रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, इन अ सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप इट इज इनफाइनाइट। ओके, तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि स्पेक्युलेटिव डिमांड है क्या चीज। you know when you are focusing more on the speculation part, when you are focusing more on, देखो स्पेक्यूलेशन हर एक बंदे के होते हैं, हर एक बंदे के अलग अलग होते हैं। इफ वी आर इफ आई हैव द मनी एंड द इंटरेस्ट रेट इन द बैंक, मेरे पास सपोज 10 लाख रुपए है और बैंक का एक इंटरेस्ट रेट है जो कि एक्स अमाउंट है, लेट्स फॉर एन एग्जांपल 10% है। तो वो 10% से मेरा स्पेक्यूलेशन शायद ऐसा भी जा सकता है कि वो 10 से 15 होगा, और किसी और का स्पेक्यूलेशन ऐसा भी जा रहा है कि वो 10 से 5% होगा। वो डिपेंड करता है कि लिक्विडिटी कैसी है मार्केट में, वो डिपेंड करता है कि पैसा कोई बंदा ले रहा है या पैसा कोई बंदा दे रहा है। So that way speculation goes different by firms to firms, by person to person. It goes increasing order, it goes in a decreasing order. So definitely when you're focusing more on the speculative demand, it is inversely related to the rate of interest. Definitely, yes, it is inversely related to the rate of interest. But in a situation of liquidity trap, ये कंसेप्ट है, ये सर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया। लिक्विडिटी ट्रैप क्या है समझो। लिक्विडिटी ट्रैप, अगर अपन लिक्विडिटी ट्रैप को फोकस करें, सो क्या होता है लिक्विडिटी ट्रैप, दिस ऑन दिस पार्ट, दिस इज अ लिक्विडिटी ट्रैप। ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिस इज द इंटरेस्ट रेट, दिस इज द मनी डिमांडेड। अभी लिक्विडिटी ट्रैप सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊं, तो लिक्विडिटी ट्रैप इज अ सिचुएशन वेयर फॉर एन एग्जांपल, आज मार्केट है, मार्केट में कोविड आ गया। ओके, आफ्टर द कोविड व्हाट हैपेंस, कोविड है, लोगों को अभी मतलब स्पेक्यूलेशन को साइड में हटाओ, जिंदा रहना है। दैट इज माय बेसिक मोटो कि पहले जिंदा रहेंगे, बाद में सब सोचेंगे। अभी उसके लिए मेरे पास आज पैसा है, बट आई एम प्रिफरिंग टू सेव दैट मनी। मैं उस पैसे को बैंक में ना रख के, मैं उस पैसे को अपने पास रखूंगा, मैं उस पैसे को संभाल के रखूंगा बेस्ड ऑन द स्पेक्यूलेशन के ओके इन द फ्यूचर शायद कोविड में लॉकडाउन बढ़े, शायद कोविड में सिनेरियो चेंज हो जाए, शायद इट इज गोइंग टू बी द डेंजरस सिचुएशन फॉर मी जहां पे मेरे पास पैसा होना जरूरी है। सो आई हैव पुट दोज मनी असाइड इन अ लिक्विड टर्म। नाउ अंडरस्टैंड, जब मार्केट में मैं सिर्फ पैसा रख रहा हूं बेस्ड ऑन द स्पेक्यूलेशन, मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि वो पैसा कहीं पे मैं इन्वेस्ट करूं या तो फिर वो पैसा कहीं पे गुड्स एंड सर्विस बाय करूं। अगर मैं बाय नहीं कर रहा तो वो गुड्स एंड सर्विस जा नहीं रही है, तो जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, वो चीजों को ज्यादा महंगा करेगा, और महंगे होने से अगेन जो कंजम्पशन था, जो डिमांड था, वो डिमांड भी कम होगा। This is also another scenario. The third scenario is when market is not, automated in a scenario where producer are producing, consumer are consuming, दोनों काम नहीं हो रहे, तो प्रोड्यूसर बोलेगा कोई कंजम्पशन कर नहीं रहा तो मैं प्रोड्यूस क्यों करूं। दैट विल क्रिएट द लॉस ऑफ द जॉब्स एज वेल। अभी लॉस ऑफ द जॉब है, तो लॉस ऑफ द जॉब से अगेन दैट क्रिएट्स द लिक्विडिटी क्रंच कि बंदे के पास पैसा नहीं है। अभी बैंक को चाहिए कि बैंक इंटरेस्ट रेट को डाउन करे और इंटरेस्ट रेट को डाउन करके ज्यादा लोगों को पैसा दे। अभी बैंक भी ये कर रही है। सो ऑल ओवर वॉट एवर यू आर डूइंग, दैट इज क्रिएटिंग मोर एंड मोर लिक्विडिटी क्रंच। मार्केट में पैसा आ रहा है, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, बट पीपल आर नॉट विलिंग टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, पीपल आर नॉट विलिंग टू स्पेंड दैट मनी। On a contrary, people are not spending or saving up those money in the banks as well. So what they are focusing on कि लिक्विड में रखो, लिक्विड में रखो। अभी क्योंकि मार्केट में ये सिनेरियो आ रहा था तो बैंक ने रेट भी कम किए। द बेस्ट थिंग बैंक नीड्स टू डू इज इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, लोगों को वहां से पैसा निकालने पे मजबूर करो। लेकिन बैंक का ये ट्रैप ऐसा है कि अगर वो कंज्यूमर के साइड सोचने जाएगा तो वो प्रोड्यूसर का नहीं सोच पाएगा, और वो प्रोड्यूसर के एंगल से सोचने जाएगा तो कंज्यूमर का नहीं सोच पाएगा। सो इन दिस थिंग दे आर एब्सोल्युटली राइट दैट this it is inversely related to the rate of interest, yes,
in a situation of liquidity trapped, it is infinite. So obviously both the statements are correct. The explanation भी है नीचे पढ़िएगा आराम से. मैंने काफी बेसिक टर्मिनोलॉजी में समझाया है. This the third question, it's a very good question. Agar if you have the habit of checking the current affairs, if you have the habit of checking the website of RBI, तो वहां से बहुत डायरेक्ट हिट था ये क्वेश्चन. How does the Reserve Bank of India discharge its statutory obligation of being bankers to government? The first statement says it maintains the principal account of central as well as the state government. Okay, yes. It is the aggregator for accounting of all GST collection. चलो यहाँ पे तुमको समझ में आया होगा, लेकिन ये थोड़ा दिक्कत वाला है कि एग्रीगेटर ऑफ जीएसटी सर समझ में नहीं आया, कुछ नहीं है. इट्स रिटन ओवर देयर. अगर आप आरबीआई के वेबसाइट में भी जाओगे, लेट्स जस्ट टाइप इफ दिस थिंग अलाउज, तो अपन गूगल करते हैं कोई भी चीज कि ओके हैंग ऑन. Let me show you directly. It's a direct hit on the RBI website itself. All you need to write is aggregator of GST RBI. This notifications RBI. और यहाँ पे अगर फोकस करोगे, that is the last part, goods and service tax. The RBI itself is primarily focusing more on the goods and service tax. When if I am a buyer, if I am having a manufacturing unit or that of the service sector, RBI is the channel which I go through to pay the GST as well. So obviously banking is the main prime focus which I am focusing that upon. So काफी easy था. अगर RBI या फिर तुमने अगर पढ़ा होगा करंट अफेयर में भी देखा होगा, तो इट इज अ वेरी डायरेक्ट हिट क्वेश्चन. तो थर्ड भी, इट्स स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट. यहाँ पे आरबीआई का सेक्शन, स्पेशली सेक्शन 21 एक्ट, इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, बट स्टिल अगर पूछते हैं तो यू शुड हैव दैट आइडिया. नाउ दिस क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट थोड़ा ट्रिकी हो सकता है बिकॉज यू मे नॉट हैव द आइडिया ऑफ डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन. ये सिनेरियो क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. डिसइंफ्लेशन इज अ सिचुएशन ऑफ द जनरल डिक्लाइन ऑफ द प्राइस लेवल of goods and service in an economy. Okay, ठीक है. Deflation aims to stop deflation in an economy. That is, reflation aims to stop deflation in an economy. यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है कि disinflation is a situation of general decline of the price level of goods and service in an economy. नहीं, ऐसा तो नहीं है. Disinflation is a different term than that of the deflation. मैं समझाता हूँ है क्या. अगर आज कोई भी गुड्स एंड सर्विस का प्राइस मैं लेता हूँ, फॉर दैट एग्जांपल पार्ले जी, एक बिस्किट है जो 5 रुपए का मिल रहा है, अगले साल मेरे को वो मिल रहा है 6 रुपए का, अगले साल मेरे को मिल रहा है 7 रुपए का, अगले साल मेरे को मिल रहा है 8 रुपए का, 9 रुपए का, 10 रुपए का. So over a period of time there is a perfect 1 rupee 1 rupee 1 rupee. परसेंटेज में कैलकुलेट मत करना क्योंकि परसेंटेज बेस वैल्यू डिफरेंट होगी तो परसेंटेज चेंज आएगा. बट इफ यू आर फोकसिंग मोर ऑन दी मॉनेटरी टर्म्स, तो एक एक रुपए हर साल बढ़ रहा है. तो दिस इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन. जैसे कि यहाँ पे ग्राफ में दिखाया, दिस कॉल्ड द इन्फ्लेशन. बट दिस इज द डिसइन्फ्लेशन. यहाँ पे एक्चुअली प्राइस नीचे नहीं जा रहा है, बट जिस रेट से वो बढ़ रहा था इन्फ्लेशन, वो नीचे जा रहा है. अगर यहाँ पे डिसइन्फ्लेशन को अपन फोकस करते हैं, सो दैट इज 5 रुपए का अगर पार्ले जी है तो वो 6 पे नहीं बढ़ेगा, वो 5.25 पे जाएगा. उसके बाद वो 6 से 7 हुआ है तो 5.50 पे जाएगा. उसके बाद 7 से 8 हुआ है तो 5.75 पे जाएगा. सो दिस थिंग और इट मे गो दिस वे एज वेल. 5 से 6 हुआ, 6 से 6.5 हुआ, 6.5 से वो 6.75 हुआ, उसके बाद वो 7 हुआ, उसके बाद वो 7.10 हुआ.
So this rate, price बढ़ रहे हैं, but that rate which focusing more on the price hike, वो rate थोड़ा कम हो रहा है। और अगर माइनस में जा रहा है, ओवरऑल प्रोडक्ट एंड सर्विस का प्राइस माइनस में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द डिफ्लेशन। कि अगर 5 रुपए का बिस्किट है, वो सस्ता होकर 4 का हुआ, 3 का हुआ, 2 का हुआ, दैट इज कॉल्ड द डिफ्लेशन। तो यहाँ पे डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन में कंफ्यूज मत होना, इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट फिर भी शायद कंफ्यूजन हो सकता है। अब now focus on this term. Disinflation is a situation of the general decline of the price level of goods and service in an economy. No, general decline of the increasing value. जिस रेट से वो बढ़ रहा था उसमें कमी हुई है, that is why. Reflation aims to stop the deflation in an economy. So definitely 2 is the correct answer explanation. B, 2 is the correct. It was a very easy question, but you should more focus on the concept rather than focusing on the question itself. क्योंकि मेरा this is my first lecture on the DICS especially for the economy, but I have the style where we are more concerned about the conceptual clarity. So साथ साथ में लेते जाएंगे. Now focus on this. Which of the following can be categorized as a high powered money? Currency and coins held by the public, deposit held by the commercial bank with RBI, deposit held by the government of India with RBI, वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक में बड़े बड़े वॉल्ट होते हैं उसमें उन्होंने जो कैश रखे हैं वो हाई पावर मनी. व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ हाई पावर मनी? इट्स नथिंग बट द मनी. यू सी, हाई पावर मनी एंड द मनी मल्टीप्लायर concept पे फोकस करना है. द करंट प्रैक्टिस इज टू एक्सप्लेन द डिटरमिनेंट ऑफ द मनी सप्लाई इन टर्म्स ऑफ monetary base or high powered money. The high powered money is the sum of commercial bank reserve है, करेंसी नोट एंड कॉइन्स है, हेल्ड बाय द पब्लिक. आगे एक बड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन आएगा, M1 M2 M3 M4, वो सप्लाई ऑफ द मनी, उसमें भी अपन कवर करेंगे. लेकिन ये हाई पावर्ड मनी दैट इज द बेसिक मॉनेटरी बेस of the economy, of that of the state economy, that of the country's economy, that of the money supply, which is more concerned about the RBI. सो उसी हिसाब से मॉनेटरी बेस को तुमको टारगेट करना है. एंड करेंसी नोट्स हेल्ड बाय द पब्लिक एज हाई पावर्ड मनी is the base for the expansion of banks deposit and the creation of money supply as well. अगर ये मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट थोड़ा डिटेल में आपको समझ में आता ना, तो ये काफी इजी क्वेश्चन था. इफ यू वांट टू want me to make another separate video for exclusively on the high powered money and the money multiplier, comment down below and tell me कि मेक अनदर वीडियो. मैं बनाऊंगा सिर्फ वो कंसेप्ट एक्सप्लेन करने पे. तो यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज एज द हाई पावर मनी? सो डेफिनेटली करेंसी एंड द कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक, डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक विद आरबीआई, डिपॉजिट हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द आरबीआई, वॉल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक. 1 2 3 and 4, that is the correct answer. Moving forward, with reference to the union budget, which of the following forms part the revenue receipt? कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, बहुत इजी चीज है, बहुत ही इजी चीज है. लेट्स फोकस ऑन द स्टेटमेंट एंड देन विल मूव फॉरवर्ड विथ द कंसेप्ट. कि बजट, फिस्कल पॉलिसी, ये सब आपने पढ़ा होगा. सिर्फ आप कंफ्यूज हो रहे हो इधर लेफ्ट और राइट, कुछ नहीं है. फोकस ऑन द स्टेटमेंट एंड देन व्हाट वी कैन एलिमिनेट थ्रू दैट. डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, ओके ठीक है, चलो इसको रखते साइड में. इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, ओके, इसको काफी अच्छे से रखते हैं. grants in aid from sector foreign governments. Select the correct answer using the code given below. Now let me explain here कि एक्चुअली में रेवेन्यू रिसिप्ट किसको फोकस करता है. इफ वी हैव गॉन थ्रू इन द लेक्चर दैट गवर्नमेंट बजट में वी हैव दिस पार्ट, द रेवेन्यू बजट, वी हैव द कैपिटल बजट एज वेल. रेवेन्यू और कैपिटल में क्या फर्क है? इतना ही फर्क है. अगर सीधे से समझे तो कैपिटल में आई एम गेटिंग द ह्यूज चंक ऑफ मनी and I am spending the huge chunk of money as well. That is the capital.
बजट, रेवेन्यू बजट में मेरा डे टू डे जितना भी एक्टिविटी है वहां से मेरे को कितना पैसा आ रहा है और डे टू डे एक्टिविटी को चलाने में मेरे को कितना पैसा जा रहा है. सो रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, दैट कंसेप्ट शुड बी देयर. यहाँ पे दे आर फोकसिंग मोर अपॉन द रेवेन्यू रिसिप्ट. रेवेन्यू रिसिप्ट किसको कहते हैं? द टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, डेफिनेटली दैट इज द रेवेन्यू रिसिप्ट. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज यू गाइस प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. आप समझो कि गवर्नमेंट जब भी ब्रिज बना रही है, गवर्नमेंट जब भी बड़ा सा स्कूल बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, दैट इज द गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर. उसको कहीं ना कहीं असेट क्रिएशन हो रहा है और रेवेन्यू स्पेंडिंग से असेट क्रिएशन नहीं हो रहा है. स्पेंडिंग की तो यहाँ पे बात ही नहीं हुई थी. यहाँ पे बात यही हुई है कि रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ कहाँ पे है? दैट इज द टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू. टैक्स रेवेन्यू में ये सारे, नॉन टैक्स रेवेन्यू में द इंटरेस्ट receipt on the loans given by the central government, the dividend profit, user charge corrected by, ये सब तुमने देखा हुआ है, लेक्चर में अपन ने कराया है. लेकिन यहाँ पे क्या है? फोकस ऑन दिस टू. इनकम फ्रॉम सेल ऑफ द स्पेक्ट्रम, ओके. ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द सेक्टर फॉरेन गवर्नमेंट, this too, disinvestment of public undertaking is not considered in the revenue receipt. क्यों? बड़ा सा चंक है, बड़ा सा चंक है मेरा जा रहा है. पब्लिक अंडरटेकिंग को मैं अगर डिसइन्वेस्टमेंट करूं तो वही जो क्रिएशन ऑफ दी हॉपन ने हॉस्पिटल बनाया ना, तो ऐसे 100 हॉस्पिटल है एक साथ बेच दो, you will get a chunk of money. So that is not called the revenue receipt. That is definitely not called the revenue receipt. So we are focusing more on this two statement. And if we go through the option 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, अगर 1 निकल गया तो ये option तो निकल गया. The correct answer itself is 2 and 3. डिसइन्वेस्टमेंट, एक ही चीज, ये एक ही स्टेटमेंट था. डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, उस पर फोकस करते तो दिस वाज अ डायरेक्ट हिट. ये क्वेश्चन भी अच्छा था, इजी था. Expenditure on which of the following are considered transfer expenditure of the government? Transfer expenditure of the government, अगर इस कंसेप्ट को फोकस करें तो गवर्नमेंट ट्रांसफर एक्सपेंडिचर किस पे करती है? Usually this concept is more emphasized on the social security, the social benefit, transfer payment. I am transferring something to you and I am not getting bloody anything in return. I'm not getting anything in return. So let's focus from the government angle कि गवर्नमेंट किस चीज पे ज्यादा वो रहेगा. पेंशन स्कीम, डेफिनेटली गवर्नमेंट नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न. सब्सिडीज, unemployment allowances, these are all the social security aspects, and in which if we have discussed the capital expenditure and the revenue expenditure. In the capital expenditure, if government is spending, government is getting the highway. If government is spending, government is getting the school, the hospital. But here government is not doing something for the benefit of the government itself, but for the social security of the people, the welfare. So यहाँ पे welfare को ज्यादा focus, that is the transfer expenditure of the government. So pension scheme, subsidies, employment, all 1, 2 and 3. The correct answer is D, 1, 2 and 3. It was easy. It was easy. Net national product NNP is obtained from GDP. Very easy question. Very bloody easy question. अगर GDP पता है, अगर depreciation का concept पता है, तो मुझे NDP पता है. अगर GDP पता है, उसके बाद मुझे national concept पता है, तो मुझे GNP पता है, और GNP में depreciation पता है, तो मुझे NNP पता है. कुछ कुछ भी नहीं पता तो तुम्हारा भाई बैठा है. Listen to me very carefully. अगर कोई एक चीज पे मैं फोकस करूं, दैट इज इंडिया, तो इंडियन जियोग्राफिकल लोकेशन में कोई भी चीज, फॉरगेट मी, प्लीज फॉरगिव मी दिस, बट समझो कि ये इंडिया है, मान जाओ आप इस चीज को इंडिया है. अगर इंडिया में कुछ भी आज गुड्स एंड सर्विसेज कुछ भी प्रोड्यूस हो रही है, कुछ भी प्रोड्यूस हो रही है, सो ये गुड्स एंड सर्विस कैसे प्रोड्यूस हो रही है? डेफिनेटली द फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग एंड आई विल बी देयर टू कंज्यूम, बट कंजम्पशन पे नहीं जाना है, सिर्फ प्रोडक्शन पे जाना है कि गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस within the country, within the boundary of the country, that is called the GDP, the final value, the final value of all those goods and services produced within the country, that is my GDP. अभी मैंने आज क्या प्रोड्यूस किया?
मैंने यहाँ पे ये पैनल है, ये पैनल प्रोड्यूस की, ये स्टाइलस, देयर इज अ कैमरा आउट देयर, ये सब प्रोड्यूस हुआ है। बट आपको क्या लगता है कि मैं जब व्हेन आई टर्न 90 तब भी मैं लेक्चर लूंगा इस पैनल पे? When I turn 90, I could take lecture, but on this panel, that is a very doubtful thing. क्योंकि it's an electronic gadget, there is the concept of depreciation. Depreciation लगता है उसको, और चीजें outdated होती है, चीजें घिसती जाती है, शायद कोई component ना चले. So when you are minusing depreciation, when we take the depreciation out of the GDP, what you get is NDP. ओके, गॉट इट। बट जीएनपी और जीडीपी में क्या फर्क है? जीएनपी में दैट इज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। if you're focusing on the word national, so the thing is, what are the goods and services produced by the nationals, my people, my firms, my citizens? So that doesn't matter that they are producing within the Indian boundary or they are producing in the Pakistan, they are producing that of in the Europe or US or Canada, वो फर्क नहीं पड़ता है। बट जीएनपी में आई एम कैलकुलेटिंग जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मेरा कोई भी बंदा कहीं पे भी दुनिया में कुछ भी काम कर रहा है, दैट इज क्रिएटिंग, प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विस, सो दैट वी हैव टू कैलकुलेट। और उसमें से सिर्फ तुमको डेप्रिसिएशन माइनस करना है, एंड there you get NNP. Now focus on these things. Deducting net factor income from abroad and adding depreciation. Adding depreciation उसको साइड में रखो, deducting the net factor income from abroad ये कैसे हो सकता है? That is exactly the opposite of the concept which we discussed. Adding the net factor income from the abroad and deducting depreciation. Now this is the correct thing. मेरे को लग रहा है, अभी भी आगे जाते हैं उसको सी और डी में। Adding the net factor income from abroad and adding taxes, taxes का मतलब ही नहीं है। Adding the net factor income from the abroad and deducting taxes, taxes को साइड में हटाओ, it's a direct hit. That adding net factor income from abroad and deducting depreciation, the answer is B in the 8th. You get a very easy answer. Explanation में भी दिया हुआ है, but I am not reading out that explanation because we are more focusing on the concept itself. है पीपीटी साइड में कुछ कुछ फोटो मैंने लाया है, अब देखते जाएंगे। Consider the following statement regarding the GDP deflator. What the hell is GDP deflator? GDP deflator is when I am talking more of the real GDP and nominal GDP. Now, sir, what is the real GDP and what is the nominal GDP? When I am calculating, अभी अपन GDP की बात किया ना, GDP goods and service का फाइनल प्राइस, अभी फाइनल प्राइस कौन सा फाइनल प्राइस ये चेयर का मैं पिछले हफ्ते लेने गया 400 रुपये था, इस हफ्ते लेने गया 500 रुपये है, अगले हफ्ते लेने जाऊंगा 300 रुपये है। इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। चीजों का प्राइस, गुड्स एंड सर्विस का, तो दे आर मोर फोकस ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। बट राइट नाउ अगर मैं रियल जीडीपी को एक बेस ईयर से लेता हूँ या तो फिर मैं करंट प्राइसेस पे लेता हूँ, एक बेस ईयर में मैंने डाल दिया कि भाई ये वाला प्राइस लेने का, अगर सलून में जाओ तो भी ये वाला गिनने का, चेयर लो तो भी ये वाला गिनने का, पेन लो तो भी ये वाला गिनने का। And when I'm focusing more on the current prices, so those are the prices which may or may not be inflated, so that real GDP और nominal GDP वाला concept अगर आपको पता है, then it's a direct hit कि GDP deflator क्या है, आपको आइडिया होगा ही होगा। GDP deflator, this is the GDP deflator. Understand GDP deflator formula: nominal GDP divided by real GDP into 100. This is, I said, the current. This is, as I said, base year. When I am focusing on the prices of the base year, that is my real GDP. When I'm focusing more on the current thing, that is my nominal GDP. Now GDP deflator, it gives what? It गिनते तो है, वो मेरे को आइडिया क्या देगा? वो मेरे को आइडिया देगा अबाउट द इन्फ्लेशनरी गैप, अबाउट द इन्फ्लेशन इन द मार्केट, कि एक्चुअल में प्राइस चीजों का बढ़ रहा है, व्हाट इज द रीजन? क्या वो क्वालिटी बेटर हो रही है, दैट इज द रीजन? कि वो ऐसे ही स्पेकुलेशन में बढ़ रहा है, दैट इज द रीजन? कि डिमांड एंड सप्लाई से बढ़ रहा है, दैट इज द रीजन?
So GDP deflator, also called the implicit price deflator, is a measure for the inflation. वो GDP deflator अगर आपको पता है तो पता है, जिनको पता है उनको पता है. It's a very simple direct hit question. Now focus on the terms, these two statement, and then we'll move forward to the options. If the value of GDP deflator is greater than 1, ये वैल्यू आपको मिलेगी कहाँ से? ये वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से, from this nominal GDP, real GDP, current prices, base year prices into 100, यहाँ से आपको मिलेगी. If the value of GDP deflator is greater than 1, then it means that the real GDP is higher than the nominal GDP. Okay, understand? GDP deflator takes into account all the goods and services that are used by the consumer of the country. Now, which of the statements given is and above are not correct? क्या लगता है तुमको? कौन सा नहीं correct है? Focus. GDP deflator takes into account all the goods and services that are used by the consumer of the country. GDP deflator का ये formula है, nominal GDP and the real GDP. Now, if the value of the GDP deflator is greater than 1, no, then it means that the real GDP is higher than the nominal GDP. Focus on the formula itself. Focus on the formula. How could that happen? So which of the following above statement are not correct? Both 1 and 2, both are not correct. It's a very easy, very direct hit, very direct hit. Answer question number 10. Which of the following statement based on the described difference between the near money and dear money? Near money and dear money, it's a very good concept. See, don't get confused with the narrow money and broad money. Narrow money and broad money is the concept which we are focusing on. M1, M2, M3, M4. This is the different concept, near money and dear money. Let's uh, solve the concept first, and then we'll move to the statement. Near money and dear money. Let me explain the money itself. Okay, पैसा क्या होता है? It consists of the coins, currency, notes, and demand deposit of the banks. Okay, understood. What is the near money? It includes the financial asset. वो नकद नहीं है. जनता के पास जो कैश है मैं वॉलेट में लेके घूमता हूँ, that is not the near money. It includes the financial asset like time deposit, bills of exchange, bonds and shares, etc. So this is the concept of near money. It lacks 100% liquidity. It involves time cost for its conventional into the money. Into the money. बस ये दो चीज अगर ने देख ली ना तो फंक्शन यूज इस पे जाने की जरूरत नहीं है. बट अगर फंक्शन पे भी जाते हैं तो पैसा, बेसिक पैसे का फंक्शन क्या है? इट सर्व्स एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ द कॉम्बिनेशन मेजर ऑफ द वैल्यू ऑल प्राइसेस. अगर मेरे को एक्सचेंज भी करना है तो आई वुड नीड दैट मनी, and it does not perform such functions, rather it's down the value of express to the money. अगर मैं चीजें मतलब जाना है, मेरे को आम खरीदने जाना है, मेरे को वॉच खरीदने जाना है और मैं एफडी का सर्टिफिकेट ले लेके घूम रहा हूँ, वो नहीं होगा. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. So focus on the statement now. Which of the following statement based describe on the difference between near money and dear money? Dear money इजी है, समझ में आ जाएगा अभी. लेट्स फोकस ऑन द स्टेटमेंट इटसेल्फ. नियर मनी इज रेडीली एंड इजीली अवेलेबल फॉर बोरोइंग owing to the low interest rate. Okay, dear money is a money that turns expensive to borrow owing to high interest rate. सर ये समझ में नहीं आया. What is the interest rate? See, if we focus on this dear money policy and cheap money policy, dear money is difficulty to obtaining credit and high interest rate. Dear money, difficulty in obtaining credit and high interest rate. Okay, ये मेरे को समझ में आया. So I'll focus more on the dear money thing. Okay, dear money is a money that turns expensive to borrow owing to high interest, but near money is readily and easily available for borrowing owing and low interest rate. किसने बोला? किसने कहा ये? Let's focus on the other statement as well. Near money is when money turns expensive, borrowing owing to high interest rate. Dear money is a highly liquid asset that can be easily converted into cash. Okay, that is very confusing. But let's move on. The next statement. Near money is a highly liquid asset that can be easily converted into cash.
that can be easily converted into cash. Liquidity, it lacks 100% liquidity. It involves time cost for its conventional into the money. Near money is a highly liquid asset that can be easily converted into cash. Dear money is a hard asset, such immovable property. नहीं, ये टोटली आपको कंफ्यूज करने ये वाला स्टेटमेंट डाला है. नियर मनी इज अ हाई लिक्विड असेट दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश. यहाँ से दिस इज द डियर मनी इज अ हार्ड असेट दैट इज द इमूवेबल प्रॉपर्टी. इसको हटाओ. It's a very easy thing that near money is a readily easily available borrowing owing to low interest. No, near money is a when the money turns expensive borrowing to owing high interest. Near money is a highly liquid asset that can be easily converted into cash. Dear money is when the money turns expensive into borrowing interest rate. Which of the following best describe the difference between near money and dear money? That is the C. Describe the best difference between the dear money and near money. थोड़ा लंबा है ये concept, but if you want me to make another video exclusively for dear money and types of currency, comment down the below and I would explain that. Focusing on the 11th question, consider the following statement with reference to the consumer price index. Very easy. Consumer price index अपन क्यों calculate करते हैं? You know, ये पूरा गेम आ गया CPI WPI वाला. अभी right now we are focusing more on the consumer price index. Consumer price index includes the prices of imported goods. Okay, side में रखते हैं. The weights of the goods measured in the consumer price index differ according to the production level of goods. Which of the statements given above are correct? So let's focus much more into the consumer price. तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. स्पेशली ये चीज आपको देखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी. Shares of the different groups of items in CPI basket. CPI basket में अपने पास क्या क्या चीजें हैं? We have food and beverages, we have miscellaneous things as of medical, the medicines, the movie tickets, we have housing 10.7%, we have fuel and light, we have the clothing, we have the pan, tobacco, intoxicants. वो भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो फिर मैं पान कैसे खाऊंगा? When the people who are that consuming tobacco, उनका क्या होगा? So CPI में we take that into consideration as well. Now focus on this imported goods. Consumer price index excludes the prices of imported goods, excludes the price of imported goods. The weights of goods measured in the consumer price index differed according to the production level of the goods. Which are the correct? Both 1 and 2. It's a very easy hit question. अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता ही होगा that understand consumer price index is the index price given basket commodities that are bought by the representative consumer. We are more focused on the consumer rather than where the product comes from. We are more focusing on that. CPI is generally expressed in the percentage term. We have 2 years under the consideration. One is the base year that you all know, ये CPI वाला. And this is very important thing. CPI includes prices of goods consumed by the representative consumer. Hence, it includes prices of imported goods. Hence, the statement 1 is definitely not correct. And if they are focusing on this, then neither 1 neither 2. अगर मैं iPhone यूज कर रहा हूँ, मैं MacBook यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग द बाइक Harley Davidson, so that is my consumption. And in the consumer price index, agar I am using things, even that of the I am consuming the ice cream, I am consuming the burger, so this maybe this could be the imported goods as well. So it cannot exclude the imported goods. तो वहां से ही बहुत easily ये समझ में आ रहा था. Consider the following statement with the reference of the broad money. This I was talking about. Narrow money, broad money is a different concept than the dear money and near money. Near का तो doubt solve हो गया. But what is the narrow money and broad money? Here we have asked about the broad money as well.
M3 and M4 in India, it is most liquid, easiest for transaction coin. ये सबको साइड में रखते हैं, पहले कंसेप्ट पे जाते हैं. कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट कहता है ये, what is the money in the circulation, that is M1, M2, M3 and M4. So these are this कॉइन एंड करेंसी विद द पब्लिक. जनता, जनता के पास कितना पैसा है, जनता के पैसा वॉलेट में कितना है, मेरे जेब में कितना पैसा है, लेकिन मेरे पास एक करंट अकाउंट भी है बिजनेस का, मेरे पास एक सेविंग अकाउंट भी है मेरा पर्सनल. तो वहां पे भी जो पैसा है, बट कैसा पैसा, कासा में रखा हुआ, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिमांड डिपॉजिट. ऐसा नहीं कि मैं बैंक को दे के आया हूँ कि पैसा लो, मैं 5 साल 10 साल के बाद आऊंगा लेने, that is my FD. So time deposit they never include in the M1. M1 में they are focusing more on the जनता के पास रहा हुआ पैसा in the bank. लेकिन शुरुआत में you understand that everywhere bank cannot go. At that time post office उस पे focus करते हैं, and still there are a lot of benefit for the vidwas as well, the farmers as well, the women as well. Post office gives that different interest rate as well. So अगर M2 की बात करें, so that is जनता के पास रहा हुआ पैसा, खुद के पास, बैंक के पास, और पोस्ट ऑफिस में उनके सेविंग अकाउंट में रहा हुआ पैसा. ऑफिस वाला चीज नहीं आता है when you are focusing more into the M3, but when you are talking about M4, तो उसमें जनता के जेब में रहा हुआ पैसा, जनता के अकाउंट में रहा हुआ पैसा, जनता ने जो FD किया है वो बैंक में किया है या तो फिर पोस्ट में किया है. M4 में सब आता है. Now focus on the statements. Consider the following statement with the reference of broad money M3 and M4 in India. It is most liquid and easiest for transaction. Difficult. Coins in circulation can be categorized as broad money. Coins in circulation can be categorized as broad money. Focus on this part as well, broad money and narrow money. Then it is more than 80% of the GDP. अगर ये last statement थोड़ा difficult था for the people who अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर M3 M4 M3 M21 concept क्या है, तो ये possible है कि आपको ना पता हो. But let's focus on this, that this statement, it is most liquid and easiest for transaction. Okay, coins in circulation can be categorized as broad money. Definitely, it is more than 80% of the GDP. How many of the statement given are correct? Only one, only two, all three, or none? Two statements are correct. Which one is not correct? This coins in circulation can be categorized as the broad money. As the broad money, that cannot happen. That cannot happen because we are focused on that diagram itself, that narrow money and broad money, coins in the circulation, they are counting coins in the circulation, in which काफी इजी था, बट सिर्फ छोटे मोटे कंसेप्ट है, उस पर फोकस करना है. In the context of Indian economy, which of the following statement is correct about the fiat money? Fiat money, the concept itself, fiat money किसको बोलते हैं? लोग ना, people get confused between legal money and fiat money, or backed money and that of the fiat money. Fiat money किसे कहते हैं? Fiat money is the type of currency that is issued by the government and which is regulated by the government and is not backed by the physical commodities such as gold. So US dollar, the euro, the pound, all are the example of fiat money. काफी easy था, even though NCERTs में भी दिया हुआ है ये वाला concept. Now correct, which of the following statement is correct about the fiat money? It has intrinsic value, it is backed by a physical commodity such as gold, silver, it cannot lose or gain value. ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, any currency or any money cannot lose or gain value. It cannot be refused by citizen of the country for settlement of any kind of transaction. Which of the following statement is correct about the fiat money? Definitely, if I am having the dollar itself, the pound itself, it cannot be refused by the citizen of the country for settlement of any kind of the transaction,
any kind of the transaction. So the correct answer here is the answer D. It has an intrinsic value. It is backed by the physical commodities such as gold, silver. यहाँ पे तो अभी तो लिखा है they issued by the government, and it is not backed by the physical commodities such as gold and silver. तो ये एक स्टेटमेंट से काफी सारी चीजें निकल सकती थी. Now focus on the 14th question. अपन फोकस कर रहे हैं ना राइट नाउ द इकोनॉमी. शुरू शुरू में थोड़े टफ क्वेश्चन थे इस मॉक में, एंड विच इज यू नो मोर टाइम क्रंचिंग एज वेल, मोर फोकसिंग ऑन द कंसेप्ट एज वेल. अभी मैं अगर एक एक चीज एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा बन सकता है, बट वी आर फोकसिंग ऑन दी थिंग्स ओनली, द सॉल्यूशन ओनली. तो 1 to 30 जितने क्वेश्चन इकोनॉमी के आएंगे, एंड एट द एंड जो भी 10-15 क्वेश्चन आएंगे वो भी अपन सॉल्व करेंगे. सो राइट नाउ इन टुडे सेशन वी आर फोकसिंग ऑन द इकोनॉमी क्वेश्चन इटसेल्फ. जियोग्राफी इसके बाद सेकंड पार्ट में अपन देखेंगे. इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Unemployment rate is the ratio of number of unemployed person to the total population. Unemployment rate is the ratio of number of unemployed persons to the total population. Labor force participation rate is obtained by dividing the number of person in the labor force by total population. अगर labor force की बात हो रही है, so right now you have to get clear in your mind that what could be the population. मेरे पास पॉपुलेशन वाला कंसेप्ट क्या है, मेरे पास लेबर फोर्स वाला कंसेप्ट क्या है, मेरे पास वर्क फोर्स वाला कंसेप्ट क्या है. ये तीन डिफरेंट कंसेप्ट है. लेट्स फोकस ऑन दिस, ऑल दिस कंसेप्ट. कि लेबर फोर्स क्या है. लेबर फोर्स रिफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग और willing to work. They may be working or they may not be working, but they are willing to work. That is why it is called the labor force. However, the workforce refers to the number of person actually working. काफी इजी था ये, काफी इजी था. पॉपुलेशन तो कौन है, क्या है, सब है, सब जितने जितने बैठे हैं दैट इज द पॉपुलेशन. उसमें से लेबर फोर्स क्या है, लेबर फोर्स दैट रिफर्स द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क. अगर किसी बच्चे को जाके उठा लिया कि भाई तुम काम करने के लिए राजी हो, नहीं है, वो राजी नहीं है, ना ही वो एलिजिबल है. वो 5 साल का है, वो अभी खेलेगा. इज राइट नाउ फोकस मोर ऑन द प्लेइंग थिंग. हाउएवर द वर्कफोर्स उसमें विलिंग टू वर्क वाला कंसेप्ट नहीं है. वर्कफोर्स रिफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग. नाउ लेट्स फोकस ऑन द स्टेटमेंट. Unemployment rate is the ratio number of unemployed person to the total population. Labor force participation rate is obtained by dividing the number of person in the labor force by total population. Which of the statement given below is correct? ये दो में से कौन से करेक्ट है? That is the second only. The labor force participation rate obtained by the क्यों क्यों कंसेप्ट देखो, बच्चे को देखो. Unemployment rate is the ratio of number of unemployed person to that of the total population. सेंस नहीं है ना, वो सेंस नहीं बन रहा है उस चीज का. दैट इज वाई. Let's focus on the 15th question. It was an easy question. Which of the following statement is correct regarding the demand pull inflation? Again and again I am telling you कि बैंक को ज़्यादा फोकस करो, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत, पॉवर्टी ज़्यादा, करंट अफेयर, 5 ईयर प्लान, इकोनॉमिक प्लानिंग थोड़ा बहुत करना है. बट दीज आर दी कोर कंसेप्ट जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं. सो बार बार अपन भी पूछ रहे हैं. You may not face such difficult question in the UPSC exam itself, but अपने को prepare तो करना ही है for the verse itself. Which of the following statement is correct regarding the demand pull inflation? So cost push और demand pull ये दोनों inflation, when we talk about this inflation कि भाई चीज़ों का प्राइस बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, कॉस्ट के हिसाब से बढ़ रहा है या डिमांड के हिसाब से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है. सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज व्हेन दैट थिंग इंटरसेक्ट, जो अपन ने पढ़ाया था, डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई दे आर मोर फोकसिंग ऑन द डिमांड व्हेन द एग्रीगेटेड डिमांड इज इंक्रीजिंग एट अ फास्टर रेट दैन द एग्रीगेटेड सप्लाई. मेरे पास पैसा है नहीं और एकदम से मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एकदम से चाहिए होली के रंग.
अभी होली के रंग एकदम से इवेंट आई, होली के रंग मार्केट में है नहीं, डिमांड 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 बहुत है, बिकॉज देयर इज एन इवेंट, देयर इज एन इवेंट। और उसके सामने वो सप्लाई अगर पैसों का है नहीं तो इटसेल्फ वो रंगों का प्राइस बढ़ा देगा। बहुत सिंपल है। सेम चीज अगर कोई लेके निकला है ऑटो रिक्शा और उसमें उसने वाटरमेलन रखा है, तो वाटरमेलन का सप्लाई आज है, ऑन अ कॉन्ट्ररी आई हैव द मनी इटसेल्फ, बट वो सप्लाई और डिमांड में वाटरमेलन में डिमांड कर रहा हूँ और वो सप्लाई नहीं है, या तो फिर वाटरमेलन है लेकिन पैसे का सप्लाई नहीं है, तो दैट क्रिएट्स द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? व्हेन देयर इज द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इनपुट। अगर मुझे ये पैनल बनानी है, अगर मुझे फोन बनाना है, अगर इफ आई वांट टू मेक दिस एप्पल वॉच, तो उसका सॉफ्टवेयर, दैट द कंपोनेंट, द स्क्रीन, द माइक, ये सब के प्राइस बढ़ रहे हैं। अगर मैं एम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ अ कार, और टायर का पैसा बढ़ रहा है, सीट का पैसा बढ़ रहा है, ग्लास का पैसा बढ़ रहा है, सो हुंडई या मारुति वाला या फिर दैट ऑफ द BMW या फिर महिंद्रा टाटा वाला क्या करेगा? वो गाड़ी को महंगा करेगा बिकॉज ऑफ द कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, पढ़ा होगा आपने। बट let let's focus on the question itself, that which of the following statement is correct regarding the demand pull inflation? It exists when the aggregate demand for a good or services outstrip aggregate supply. Okay. In the case of demand pull inflation, the economy breaks out of the Philip curve. Philip curve याद रखो, Philip curve इन्फ्लेशन में अपन ने पढ़ाया था। Philip curve कहता है कि इन्फ्लेशन ज़रूरी है। इन्फ्लेशन कितना ज़रूरी है? जहाँ पे थोड़ा बहुत आपका they focus on the prices itself, they focus on the employment itself, और एम्प्लॉयमेंट को भी आप जनरेट कर सकते हो बेस्ड ऑन द स्पेकुलेशन ऑफ द प्रोड्यूसर के प्राइस बढ़ेगा, मैं पैसा कमाएगा, और उस हिसाब से वो प्रोडक्शन को भी ज़्यादा फोकस करेगा। एग्जाम में आएगा, अपन ने लेक्चर में भी फिलिप को करवाया है। इन द केस ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, द इकोनॉमी ब्रेक्स आउट of the Philip curve. Select the correct answer using the code given below. Which of the statement is correct? As itself says that only one is correct. Only one is correct. एक बार वापस से रिवाइज कर लीजिएगा डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश, और उसमें से डिमांड पुल इन्फ्लेशन ये क्या है अपन ने अभी करवाया है, दैट इज इन द एक्सप्लेनेशन। एंड फिलिप को जैसे अपन ने अनएम्प्लॉयमेंट, राइट नाउ आई जस्ट सेड that it is focusing on more on the unemployment. Philip Cow is an economic concept developed by a Williams and focusing on the employment है। काफी डिटेल में जाएंगे तो काफी, क्योंकि मैं फिर करवाता जाऊंगा और काफी डिटेल में होगा। नियो बैंक, नियो बैंक, नियो बैंक, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। और पहला ऑप्शन ही देख के मेरे को तो बड़ा मजा आया। अवार्ड अंडर द बेसल नॉर्म्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेस्ट बैंकिंग रिफॉर्म्स, नियो बैंक। Neobank, that is an award. Okay, it says the bank itself. These are the financial technology companies that operate solely digitally. Banks which have been merged under the recent merger of banks in India. ये ऑप्शन ही इतने मीठे मीठे थे ना कि वो बार बार मुझे कह रहे थे कि फोकस मोर ऑन द बी। बैंक्स दैट गिव द लोन ओनली टू न्यूली स्टार्टअप कंपनीज, ऐसा नहीं है। नियो बैंक कंसेप्ट क्या है? यू हैव द ट्रेडिशनल बैंक। ट्रेडिशनल बैंक क्या है कि मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, मेरे पास चार बंदे हैं, और चार में से तीन बंदे कैसा है कि एक बज गया, खाना खाने का टाइम है, अब मत आओ। सो आई हैव द फिजिकल स्ट्रक्चर in the traditional bank. I have the proper staff, I have the people, they are more focused on the timing, on the operation, on the things. But neo bank, the new aged bank, which are more focused on the web and mobile service, and market entry up to 10 years ago, एंड फ्लेक्सिबल वर्च्यू इजी मनी। अगर ये इसकी मार्केट एंट्री की बात करो तो बैंक अगर थी तो ब्रिटिश एरा में भी अपन ने देखी थी। देयर इज द ओथ बैंक एज वेल, द इंपीरियल बैंक एज वेल, द बैंक ऑफ पंजाब एज वेल। So these are very old bank, traditional banks, but neo banks, it's a very new concept, where in mobile service, flexible, virtual, easy to phone and online. They don't have the actual physical premises, they don't have that. So award की तो बात यहाँ पे आती ही नहीं थी। It's a very easy question, that these are the financial technology company that operate solely digitally, solely digitally।
Okay, let's move forward to the 17, which is a very good question. Very good question. That which of the following industries are covered under compulsory licensing? ये कॉमन सेंस से भी आप कर सकते थे कि कंपलसरी लाइसेंसिंग से कौन कौन सी चीजें कवर हो रही है. टोबैको आइटम, ओके. इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट, डेफिनेटली होना ही चाहिए ना डिफेंस इक्विपमेंट. मतलब मैंने ऐसे ही शुरू कर दिया गन बनाना, बॉम्ब बनाना. हैजार्डस केमिकल्स, डेफिनेटली. इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, ये यहाँ पे द ब्रूइंग ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, अगर मालिया साहब की बात करो, सो देयर इज अ किंगफिशर कंपनी, द डिस्टिलेशन एंड ब्रूइंग ऑफ द अल्कोहलिक ड्रिंक्स, इसको क्या चीज की जरूरत है? दैट इज द कंपलसरी लाइसेंसिंग. एक चीज समझ जाओ, कंपलसरी लाइसेंसिंग किसको चाहिए अपने को? व्हेन आई एम प्रोड्यूसिंग समथिंग व्हिच इज somewhere somewhat hampers my environment, which is somewhere hampers the social environmental structure. So वो चीज मेरे को नहीं करनी है. So if we focus on this, then obviously option 1, 2, 3, 4, this is my answer that requires the compulsory licensing. Alcoholic drinks and beverages, they it does not require the compulsory licensing. This is the national food. This focus on the next question. Let's move forward. The next question, यहाँ पे ये है location restriction. ये तो आ गया definitely. But this कहाँ पे है? Supreme Court in the 1970 judgment demarcated regulation of production of alcohol between the central and the state. Thus, the central government regulates the production of alcohol for industrial use. The state regulates the production of alcohol for the domestic consumption. Okay, so alcohol was the key thing. Consider the following statement regarding the central issue price under the National Food Security Act. NFSA. What is the National Food Security Act? National Food Security Act. The government has discontinued the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, and they are more focused on the National Food Security Act. Understand, it is focusing on the access, stability, utilization and availability of food itself. It gives the food security. Food security to whom? Food security to the people, food security to the household. And the eligibility criteria, ये एक PDF है, मैं share कर दूंगा. But let's focus on the statement. It is the price at which Food Corporation of India procures food grains from various agriculture market across India. It procures food from various agriculture market across India, and it is decided by the Commission for Agriculture Cost and Prices. Which of the following statement is not correct? Is definitely not correct. अपन उस पे ही है ना? Okay, हाँ, definitely not correct. That is option A, one only, not correct. Two, both, one and two, and focus on the D, neither one and two. So definitely, if not correct, the price of the which food corporation of India procures food, वो फोकस किस पे कर रहा है? वो फोकस कर रहा है नेशनल फूड सिक्योरिटी पे. वो एलिजिबिलिटी ढूंढ रहा है, वो बंदे ढूंढ रहा है जिसको फूड प्रोवाइड कर रहा है, वो स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प ले रहा है, वो वहां से भी फूड को डाइवर्ट कर रहा है. सो इट्स अ मोर ऑफ द फूड सिक्योरिटी for the people rather than this thing. So which are not correct? Both 1 and 2 are not correct in this. Let's focus more on the 19 question. This share, which of the following trends was seen in the Indian agriculture sector post 1991 economic reform? That is the LPG reforms. LPG reforms, you all know about it. अपन ने काफी अच्छे से डिटेल में करवाया है. The share of the agriculture sector in the gross domestic product has declined. The share of the agriculture sector in the gross domestic product has declined. Public investment in the agriculture sector has increased. Focus on this keyword, increase. Public investment. Public investment, when government is more focusing on the agriculture, जैसे कि अपन ने green revolution की बात की, so they are more focused on the production, they more focused on the farms production,
and how to increase by way of the means, by way of the seeds which we use. If we focus on this two statement, which of the following trends was seen in Indian agriculture? एक ग्राफ यहाँ से छोटा सा मैंने दिया है, परफॉर्मेंस ऑफ इंडियाज एग्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पे अगर अपन बाद में बात जा रहे हैं, लेकिन अगर एग्रीकल्चर कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, then there is the thing called export and import. And in India's agriculture share in the global agriculture rose from less than 1% in 1991 to 2.6% by 1314. Total agri trade export import, which has the 5% of agri GDP in 1991, stood at 20% by 2013 एंड 14। और ये ग्राफ भी मेरा ऐसे जा रहा है, ये ग्राफ भी ऐसे जा रहा है। सो नाउ इफ आई हैव गॉन थ्रू दिस, तो मुझे पता होगा कि पोस्ट 1991 इंडिया विटनेस अ रैपिड ग्रोथ इन द जीडीपी ऑन अ कंटिन्यूअल बेसिस फॉर नियरली टू डेकेड्स। और वो ग्राफ से अपन ने देखा भी 2013 वाला सिनेरियो, 5.6% 1980, ये सब अपना होगा। but the reforms have not been benefited the agriculture. Public investment in agriculture sector, especially in the beginning when we were very focused on the agriculture, अभी तो जीडीपी में सेक्टर अलोकेशन में ही अपन सर्विस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। So when public investment in agriculture sector is especially the infrastructure, which includes irrigation, power, roads, market linkages, research and extension, which played a crucial role in the green revolution, has fallen. Government somewhat somewhere post 1991, if you have focus, then we were focused on the service sector, we were more concerned upon the manufacturing sector। 1991 में there is a Hero Honda, there is a Maruti Suzuki, Kawasaki को भी बजाज के साथ अपन ने किया है। So where the green revolution के बाद वाला scenario has fallen, then hence statement 2 is definitely not correct। It's a very easy direct hit question, statement 1 is correct, 2 is not correct, so definitely the answer is answer 1 only। Let's focus more on the anti-dumping duty। Anti-dumping duty, with reference to the anti-dumping duty, consider the following statement। anti-dumping के साथ साथ मैं एक और चीज भी समझा देता हूँ, that is called the countervailing duty। countervailing duty भी अपन करते हैं। anti-dumping duty है क्या, बेसिकली एक चीज है क्या? अगर मेरे पास इसको हटाओ, जरूरत नहीं है। अगर एक प्रोड्यूसर है मेरा यहाँ पे, जो क्या बनाता है, जो वॉच बनाता है या तो फिर वो टॉय बनाता है, और इंडियन मार्केट में मेरा प्रोड्यूसर टॉय बना के लोगों को बेच रहा है एट सर्टेन कॉस्ट। जैसे कि दिवाली में चीज़ें आ गई, लाइट्स आ गई, दिए आ गए, मेरा प्रोड्यूसर बना रहा है और बेच रहा है एट दी प्राइस ऑफ 100। बाहर से चाइना, देयर इज अ कंट्री, उसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज़ अ वेल एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, चीप लेबर, सस्ते में प्रोड्यूस करके 10 रुपये में बेच रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि मैं उसको मना करूँगा, मैं कर ही नहीं सकता। ऑब्वियसली वी आर मोर फोकस ऑन the business, and after the LPG reforms, after the WTO, World Trade Organization, you see that trading is important। I cannot refuse, I cannot stop people from selling their things in the market, but definitely I can do certain thing to safeguard my producer's interest। उसको भी पैसा मिलना चाहिए। अगर 10 के सामने 100 का प्रोडक्ट बिकेगा, तो डेफिनेटली देयर इज अ ह्यूज डिसएडवांटेज। तो फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी डाल के, मैं ऐसा नहीं है कि 100 के सामने मैं 100 ही करूंगा या 100 से महंगा करूंगा, बट एंटी डंपिंग ड्यूटी आई विल गिव यू दैट एक्स्ट्रा एज टू कवर योर लॉसेस एंड टू गिव यू एटलीस्ट द फाइटिंग एज। अगर मैं यहाँ पे बजाज बना रहा हूँ और यामाहा की बाइक बना रहा हूँ, यामाहा दैट इज अ फाइन Japanese company, but India में they are manufacturing good bike that starts from 1 lakh, 1.5 lakh or 2 lakh। उसी प्राइस रेंज में हार्ली डेविडसन भी आ रहा है, 2 लाख में ही आ रहा है, 1.5 लाख में ही आ रहा है, बट इट इज दी फुल्ली, इट इज दी होल प्रोडक्ट एज अ, यहाँ पे उसका असेंबल यूनिट भी नहीं है, यहाँ पे उसका वो भी नहीं है। सो एक एज अ प्रोडक्ट सीधा बन के आ रहा है। सो आई हैव इंक्रीज दैट टैक्स टू सेफगार्ड माई प्रोडक्शन। ऐसा नहीं है कि मैं यामा जापान वाले को बचाना चाह रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे एक यूनिट बचाना चाह रहा हूँ जिससे एटलीस्ट मेरा एम्प्लॉयमेंट पे फोकस आए, जिससे मेरा इंडियन इंटरेस्ट सेफगार्ड हो इन टर्म्स ऑफ द यामाहा इंडिया यूनिट।
So anti-dumping duty, they focus more on that thing, where anti-dumping duty is applied when it's determined that the foreign supplier or manufacturer are selling goods in the, this is the US market, but in the India market in less than the fair market value. 100 के सामने 10 रुपए की चीज बेचती है, तो फिर वहां पे एंटी डंपिंग ड्यूटी का रोल आएगा. But what is the countervailing duty? Countervailing duty, the concept is quite different than anti-dumping duty. But वो किस पे फोकस करता है? वो फोकस करता है when you know I am producing something, और वो यूएस में प्रोड्यूस हो रहा है, वो यूरोप में प्रोड्यूस हो रहा है, और वहां पे प्रोडक्शन के चक्कर में मैंने प्रोड्यूस कर दिया क्या? मैंने प्रोड्यूस कर दिया ई साइकिल, मैंने प्रोड्यूस कर दिया ई स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर, और वहां पे बिकॉज नीदरलैंड में देयर इज अ ह्यूज डिमांड, ओला का स्कूटर आता है ना, नीदरलैंड की कंपनी है, उसके साथ कोलैब है, तो वहां पे दे गिव द सब्सिडी to produce that scooter or to produce the component of e-scooters. So when countervailing duty is applicable when a foreign government provides subsidies or assistance to the local industry, resulting the lower pricing of the goods in my country. तो तब भी मैं उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे डाल रहा हूँ. सो यहाँ पे फेयर मार्केट प्राइस का कंसेप्ट है. 100 रुपए का मैं बेच रहा हूँ और 10 रुपए का आप वहां से भी, तो चाइना में भी वो प्रोडक्ट 10 रुपए का ही है और 10 रुपए का बिक के वहां पे आ रहा है. यहाँ पे यूरोप में या तो फिर कहीं और कंट्री में वो चीज महंगा है, बट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द सब्सिडी टू पुश दैट प्रोडक्शन, वैसा वाला सिनेरियो है. देन it is the countervailing duty. That is the example of countervailing duty. Now let's focus on these statements here. Which of the statement given above is are correct? ये keyword काफी बच्चे मिस कर जाते हैं, correct incorrect वाला, तो उस पे focus रखना. Which of the statement is are correct? An anti-dumping duty is a type of protectionist tariff that a domestic government impose on a foreign import. Okay, that is a great thing. In India, the Directorate General of Trade Remedies is the final authority of imposing anti-dumping duties. आपको बताऊं, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमिडीज, it has the role, but it is not the final authority. It definitely has the more major role. वो ही जाके वो रेट फिक्स करेगा, वो ही जाके वो चीज आगे करेगा, लेकिन it is not the final authority. So this is definitely statement 1 is correct, but the final authority here is the Commerce Ministry. Ministry of Commerce and Industry is the final authority. Definitely Directorate General of Trade Remedies has the role to play. ऐसा नहीं है कि उसको भी निकाल देना है. It has the role to play, but it is not the final authority imposing the anti-dumping duties. ठीक है? It's the Ministry of Commerce. 21. Which of the following domestic support measures in agriculture can be identified under WTO's green box? सब्सिडी की बात आ गई भाई, सब्सिडी की बात. WTO's favorite subsidies, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी एंड ब्लू बॉक्स सब्सिडी. अगर ये कंसेप्ट आपको पता है तो ये एक डायरेक्ट हिट था, एक easily direct hit था. Green box subsidies, the subsidies that do not distort the trade or cause minimal disruption, it has no limit. Amber box subsidies, it has the limit of 5% agriculture production and 10% for the developing countries. दूसरा ये चीज याद रखना, ये सब्सिडीज है which is focusing is that of the agriculture, तो वो कहीं ना कहीं अगर फोकस करेगा for the डेवलपिंग कंट्रीज पे ये फोकस हो रहा है. If we talk about the green box subsidy, the question itself, then subsidies that do not distort the trade or only minimal distortion, usually these subsidies are not for specific product. Green box subsidies are allowed without any limit. It is clearly mentioned, it has no limit. They can include direct income support for the farmers that are decoupled from the current production levels under or the prices. Now let's focus on the statements here. Which of the following domestic measures in agriculture can be identified under WTO's green box? Green box, direct income support for farmers that are not related to current production level. Okay, उसको रखते हैं साइड में. Agriculture input subsidies available to low income producers
in developing countries and environmental protection and regional development programs. Which of the following are correct? All three are correct, definitely. As we have seen this, the subsidies, it has no limit, that can include the direct income support to the farmers and decoupled with the production. Direct income support for the farmer, agriculture input subsidies available to low income in the developing countries, and environmental protection and regional development programs. Definitely all are correct. Question 22, let's focus on the RBI's prompt corrective action. It's a very good question, very good question. But if you know, you know. What is prompt corrective action? First, you need to focus on that. Prompt corrective action एकदम जल्दी से लेना है, और RBI लेगा किस पे? RBI लेगा बैंक, कौन सी बैंक पे? Focus, this is a picture I have taken from the RBI itself, are published by RBI. But prompt corrective action में it has this capital, asset quality and profitability, वहां से leverage, asset quality और capital, ये शायद आपको कंफ्यूज करेगा। बट समझो कि एक बैंक है मेरे पास मार्केट में, और वो बैंक कर क्या रही है? बैंक को एक चीज सोचनी है कि मैं पैसा कहाँ पे दे रहा हूँ और मेरा रिटर्न कहाँ पे आ रहा है, कौन सा पैसा रिटर्न आएगा। एक आगे अच्छा सा क्वेश्चन है रिस्क वेटेड, वो भी अपन देखेंगे, लेकिन कौन सा पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे मेरा पैसा जा रहा है। अगर एनपीए का इश्यू बार बार वहां पे है और एनपीए बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, सो वी आर मोर फोकस्ड ऑन how the working of the bank happens. If bank is actually serious or not serious, that we have to check. And RBI is in the prompt corrective action. RBI gives you that threshold, the threshold of this, the tier 1 threshold, tier 2 threshold and tier 3 threshold. This is the risk. और उसमें the net NPA ratio 6 to 9%, that is the one first threshold. If the NPA ratio, non-performing asset ratio, is 9 to 12%, that is the second one. And if the threshold is NPA creates more above 12%, then it is a very risky thing for a bank to happen. Let's focus on the statement. In the context of prompt corrective action, RBI's prompt corrective action shall be applicable to both private and government deposit taking NBFCs, non-banking financial companies. Non-performing asset as well as tier 1 capital shall be parameters to impose restriction upon NBFCs. Which of the statements given above is are correct? Definitely RBI's prompt corrective action shall applicable to both private and government deposit taking NBFCs. ऐसा तो है नहीं ना कि there is a difference जो RBI कर रहा है. And non-performing asset as well as tier 1 capital should be the parameters to impose restriction upon NBFCs as well. Definitely, as we have seen that, which of the above statement is correct? Only second one, only the second one. How? See, if we focus on that of the government banking, the NBFCs, non-banking financial companies, first we need to understand what are the NBFCs. What are the NBFCs? NBFCs are the company. Hold on, guys. I guess my system is not working.